Hi, I'm Gautam Khanna. Welcome back to my Excel class where learning is number one priority. In today's tutorial, we will learn about difference between average, average if, and average ifs. Average. Syntax for average function is equals to average open parenthesis number 1 comma option number 2 comma so on then close parenthesis. Average function in Excel returns the average or can say arithmetic mean of numeric arguments. The average function syntax has the following arguments. Number 1, the first argument, comma the cell reference or range for which you want the average. Number 2, comma so on. These are the option arguments in which we will provide the additional numbers, cell references or ranges for which you want the average. Average function can handle up to 255 individual arguments which can include numbers, cell references, ranges, arrays and constants. Example, equals to average A1 to A3 will provide me the result 3. Excel calculates an average or arithmetic mean by adding numeric values and dividing by the count of numeric values. This behavior can be duplicated by using the sum and count functions like this, equals to sum A1 to A3 divided by count A1 to A3. This will provide me the same result, that is 3. तो इसमें वो सबसे पहले जितनी भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू थी उनको वो सम करेगा और उसके बाद जितना उनका न्यूमेरिक वैल्यूज़ का काउंट है उससे उसको वो डिवाइड कर देगा. नाउ वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट एवरेज. 1, 2, 3, come on! तो स्टार्ट करते हैं. इक्वल्स टू एवरेज ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद सिंपल से हम रेंज दे देंगे और क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर, बूम. एवरेज इफ. The syntax for average if is equals to average if open parenthesis range comma criteria comma average range then close parenthesis. The average if function return the average of cells in a range that meet a single condition. The first argument is the range to apply criteria to. The second argument is the actual criteria and the last argument average range is the range containing the values to average. So अब हम average if का प्रैक्टिकल करते हैं. Equals to average if open parenthesis, सबसे पहले हमें रेंज देनी है क्राइटेरिया रेंज. मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसको मैं साथ साथ F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा इस रेंज के अंदर मैं क्या देखना चाहता हूँ, साउथ कॉमा एवरेज रेंज. तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, मेरी एवरेज रेंज ये रही. इसको भी मैं साथ के साथ फिक्स कर दूंगा F4 से, देन क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर, बूम. एवरेज इफ्स. सिंटैक्स फॉर एवरेज इफ्स इज इक्वल्स टू एवरेज इफ्स ओपन पैरेंथेसिस average underscore range comma criteria underscore range 1 comma criteria 1 comma so on, then at the end close parenthesis. Description. Excel's average ifs function average cells in a range using supplied criteria. Unlike the average if function, average ifs can supply more than one set of criteria. With more than one criteria range, the first range is the range to be average. The criteria are supplied in pairs, criteria range, comma criteria, and only the first pair is required. For additional criteria, you can supply additional criteria underscore range, comma criteria pair. The average if function's syntax has the following arguments. Average underscore range, the range to be averaged. Second, criteria underscore range 1, the first range to evaluate. Third, criteria 1, the criteria to use on range 1. Next, criteria underscore range 2, this is an optional argument, the second range to evaluate. Criteria 2, this is also an optional, we will provide this thing if we are providing the criteria underscore range 2. The criteria to use on range 2. Now we will start average ifs. एवरेज इफ्स में अब हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया का बैरियर हट गया है. नाउ इट्स आवर चॉइस कि अब हम सिंगल क्राइटेरिया देना चाहते हैं या मल्टीपल क्राइटेरियाज.
यहाँ पे अब करंटली मैं देना चाहता हूँ 2 क्राइटेरियाज। पहला मैं चाहता हूँ कि कॉलम ए के अंदर वो देखे साउथ को और कॉलम बी में वो देखे जैन की वैल्यूज़। तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू एवरेज इफ्स ओपन पैरेंथेसिस। सबसे पहले इसके अंदर हमें देनी है एवरेज रेंज। एवरेज इफ में ये चीज़ सबसे लास्ट में होती है और इसके अंदर ये चीज़ सबसे स्टार्टिंग में आती है। तो मैंने रेंज दे दी है, साथ के साथ उसको फिक्स भी कर दिया 4 से, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहले मेरे को देखना है साउथ को। ये है मेरा इस रीजन के अंदर, तो मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 है मेरा साउथ, कॉमा अब मेरे पास ऑप्शन है क्राइटेरिया रेंज 2। यहाँ पे मेरे को सेकंड क्राइटेरिया चाहिए जैन का, तो मैं उसके लिए अब रेंज सेलेक्ट कर लूँगा मंथ की। उसको साथ के साथ मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा अब मैं कोटेशन के अंदर डाल दूँगा जैन, देन कोटेशन क्लोज, देन क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर। तो अब उसने एवरेज कर दिया साउथ की जहाँ जहाँ पे उसको जैन मिला है। Additional operators and wildcards that can also be used while providing criteria. Operators. In average if and average ifs, you can also provide comparison operator in criteria. You can use them within double quotes. Example, in quotation you can provide greater than 1 or less than 1, equals to 1, not equals to 2, greater than equals to 1, less than equals to 1. Wildcard. The wildcard characters question mark and asterisk can be used in criteria. A question mark matches any one character and an asterisk matches any sequence of characters. Example, text then asterisk or the asterisk then text. Or for question mark, you can write quotations then your text that you want to particularly find, and after that question mark the word that you are missing. Even this question mark can be in between, like in quotation TE question mark T then quotation close. That's pretty much it from my end. Please let me know in comments which one is your favorite Excel formula, and I will see you next time.